Hello everyone. Hope so. सुनाई दे रहे हैं. Let's start the today class. Hello everyone. Hello everyone. Hope so. Hello. Hello everyone. Start the today class. Okay. हेलो एवरीवन, होप सो सुना दे रहे हैं. चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. आज की क्लास होगा यूपीएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर प्रीलिम्स के लिए, स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी की. चलो पहली क्वेश्चंस तुम देखो, यहाँ पर तुम आंसर दोगे और तुम्हारे पास टाइम नहीं देख रहे हो तो अगर तुम लाइव नहीं देख रहे हो तो तुम पॉज करके भी उसको आंसर दे सकते हो. डन. चलो पहले क्वेश्चन करो. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कौन से स्टेटमेंट? 1 मिनट. चलो करो, फर्स्ट क्वेश्चन करो. ओके, पहली क्वेश्चन करो. Consider the following statement. Some microorganisms can grow in environments with temperature above the boiling point of water. पहली बात तो what is the microorganisms? ओके, बाद में एनालिसिस करूंगा, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो. Some microorganisms can grow in environments with temperature below the freezing point of waters. Some microorganisms can grow in highly acidic environment with a pH below 3. डन. कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा बोलो. चलो नेक्स्ट. 2 नंबर क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. बैलिस्टिक मिसाइल्स आर द जेट propelled at the subsonic speed throughout their flights, while the crucial missiles are the rocket powered only in the initial phase of the flight. Okay. Ogni 5 is a medium range supersonic crucial missiles, while the BrahMos is a solid fuel intercontinental ballistic missiles. कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? तो क्या बोल रहे हैं? बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड. सबसोनिक स्पीड में क्या होगा? जेट प्रोपेल्ड होगा थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स. ओके. While the crucial missiles are the rocket powered only in the initial phase of the flight. Okay. चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखो. अग्नि 5 is a medium range supersonic crucial missiles, while the BrahMos is solid fueled intercontinental ballistic missiles. कौन से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? ऑप्शन हो गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो. Which one of the following countries has its own सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स. कौन से फॉलोइंग कंट्रीज होगा जिसके पास खुद की सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स है? ओके. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, जापान. क्या होगा? चलो नेक्स्ट. कंसीडर द फॉलोइंग एक्शंस. डिटेक्शन ऑफ ए कार क्रैश और कोलिजन्स व्हिच रिजल्ट इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली. Detection of the accidental free fall of a laptop towards the ground, which result in the intermediate turning of the hard drives. Okay, the detection of tilt of the smartphone, which result in the rotations of display between the portrait and the landscape mode. क्या होगा बोलो. कंप्लीट करो क्वेश्चन को. क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्या बोला है. हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्शंस इन द फंक्शन ऑफ द एक्सेलरोमीटर रिक्वायर्ड. चलो नेक्स्ट. माइक्रो सैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड इन द केस ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग. माइक्रो सैटेलाइट डीएनए स्टडिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप among the various
species of fauna, and the stimulating stem cells to transform into diverse functional tissue, and promoting the clonal propagation of the horticulture plants, assessing the efficiency of drug by conducting series of drug trials in a propulsions. बोलो क्या होगा? Next, aerial metagenomic base refers to which one of the following situations: collecting DNA sample from air in a habitat at one go, understanding the genetic makeup of a avian species of a habitat, using the airborne device to collect the blood samples from the moving animals, sending drone to inaccessible areas to collect the plant and animal samples from the land surface and the water bodies. Chalo next. Consider the following activities. Consider the following activities. Spreading the final ground basalt rock on farmland extensively. Increasing the alkalinity of oceans by adding lime, capturing the carbon dioxide released by the various industry and the pumping it into the abundant subterranean mines in the form of the carbonate water. How many of the above activities are the often considered and discuss the for carbon capture and the sequences? बोलो क्या होगा? 10 क्वेश्चन देखेंगे देन उसका एनालिसिस करेंगे. हाँ, चलो नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 8. With reference to the communication technologies, which are the difference between the LTE, that's long term evolution, the VoLTE, that's voice over long term evolutions. Okay, LTE is the commonly marked as 3G and VoLTE is commonly marked as advanced 3G. LTE is data only technology and the VoLTE is the voice only technology. बोलो क्या होगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. According to the whose following statement, according to the Indian Patent Act, a biological process is created. A seed can be patented in India. In India, there is no intellectual property appellate board. Plant variety are not eligible to patent in India. Which one of the statements are the correct? बोलो क्या होगा? Next 10 questions, 10 number question. In the context of the digital technology के context में for entertainment, which one of the following statement? बोलो. The augmented reality is simulated environment is created and physical world is completely shut out. Then virtual reality images generated from a computer and projected into a real life object or the surroundings. Augmented reality allows the individuals to be present in the world and improve the experience using the camera of smartphone and the PC. VR closed the world and transpose individuals, providing complete immersion experience. Which of the statement is correct? तुम कमेंट में बोलो कि 10 क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन तुम्हारा करेक्ट हुआ है. ओके, चलो देखते हैं. पहली क्वेश्चन. देखो पहली क्वेश्चन में क्या बोला है? Consider the following statements. Some microorganisms can grow in environments with temperatures above the boiling point of the water. वाटर की बॉइलिंग पॉइंट एवं में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट्स मीन द माइक्रो लेवल में ग्रो हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना नॉर्मली. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो. देखो पहली ऑप्शन क्या होगा? सी होगा. दूसरी क्या? डी होगा. देन तीसरी भी डी. ओके,
तो क्या बोला, पहली क्वेश्चन देखो, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विद टेम्परेचर्स अबव द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के अबव में टेम्परेचर में होगा, उस टेम्परेचर में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सकती है। दैट्स मीन ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो सकती है। ओके, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स with temperatures below the freezing point of the water। दैट्स मीन 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे मिनिमम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सकती है। ओके, सम माइक्रोऑर्गेनिज्म्स कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक एनवायरमेंट्स विद ए pH below 3। ओके, दैट्स मीन pH अगर 3 से भी बिलो होगा तो तब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं। ओके, तो चलो इसका एनालिसिस करो। Microbes isolated from the vents achieved optimal growth at the temperature higher than the 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो सकती हैं। Note all the examples of the Cyrobolas and the Pyrodictum and Archaea that grow at 105 degrees Celsius and the survive autoclaving. Both the thermophilus and the hyperthermophilus require specialized heat stable enzymes that are resistant to the denaturations and the unfoldation. Archaebacteria, that's in the thermophilia, are ancient form of bacteria found in the hot water spring and deep sea hydrothermal vent. They are able to survive the high temperatures because their body have adapt to such environmental conditions. Then microbial growth जो होगा or the metabolic activity has been reported in the pharmaphos bacteria. Okay, pharmaphos bacteria उसके बारे में बोल रहे हैं, pharmaphos bacteria के बारे में बोल रहे हैं at the -100 degree Celsius and in the Antarctic crypto endolithic microbial community at the temperature between the -5 to -10 degrees Celsius, and the temperature limit of the bacterial growth in frozen food is generally considered to be -8 डिग्री सेल्सियस। वही मेन चीज तो यही है। ओके, देन उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑप्टिमली एट pH लेस देन 5.5 आर कॉल्ड द एसिडोफिलिस। क्या बोलते हैं इसको, एसिडोफिलिस बोलते हैं, एसिडोफिलिस। फॉर एग्जांपल द सल्फर ऑक्साइडिंग सल्फर व सॉफ आइसोलेटेड फ्रॉम द सल्फर। तो एक पहली बात तो ये इतना कुछ यहाँ पर नहीं चाहिए, ओनली इतना याद रखो क्या कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सकते हैं ग्रेटर देन 100 सेल्सियस, लेस देन 0 सेल्सियस एंड लेस देन pH 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सकते हैं। जैसे इतना याद रखो हो जाएगा। ओके, चलो उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बोल रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल आर जेट प्रोपेल्ड at the subsonic speed throughout their flight. Ogni 5 is a medium range supersonic crucial missile, while the BrahMos is solid fueled intercontinental ballistic missiles है। ओके, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है, क्या होगा ना, इधर दोनों ऑप्शन ही फॉल्स है। बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है, क्रूशियल मिसाइल होती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी होती है।
This level systems has been its own satellite navigation systems. That is the Japan's.